Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing very well. So, today we are going to start chapter number 8, that is Computer Threads of class 6. Okay, students? So, please open your book. So what are the computer threats? We will learn in this chapter. Okay, students? So a virus is a computer program that executes when an infected program is executed. जब भी कोई infected program execute होता है कंप्यूटर पे तो वायरस एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि execute होता है. Okay, a virus reproduces its own code by attaching itself to other executable files in such a way that the virus code is executed when the infected executive file is executed. जब भी कोई भी फाइल होगी एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम उस फाइल को, ठीक है, वो फाइल इन्फेक्टेड है, किससे? वायरस से इन्फेक्टेड है, लेकिन जब हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो जहां पर भी हो जाएगी तो वो बाकी फाइल्स को भी क्या करने वाली है, बाकी फाइल्स को भी वायरस से इंजेक्ट करने वाली है. ओके, वायरस से इन्फेक्ट करने वाली है. अ वायरस रिप्रोड्यूसेस इट्स ओन कोड बाय अटैचिंग इटसेल्फ टू द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स. वायरस जो भी एग्जीक्यूटिव फाइल्स है उनके साथ अटैच होगा और जहां भी फाइल एग्जीक्यूट होंगी वहीं वो वायरस जाएगा और फाइल्स को फाइल को इन्फेक्ट करेगा. ओके स्टूडेंट्स, अ वायरस इज एबल टू रेप्लिकेट एंड इट क्रिएट्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ. जैसे कि वायरस क्या होता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है. रेप्लिकेट मतलब मल्टीप्लाई करता जाता है. ओके, so it keeps on replicating itself and it creates copies of itself. It needs to have some form of distribution such as wide disk or a computer network. Okay, और ये कहाँ से आता है? जैसे कि वाइड डिस्क से आ गया है, कंप्यूटर नेटवर्क से आ गया है. सो बाय द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन में, डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी डिवाइसेस होते हैं वहां से हमारे कंप्यूटर में वायरस इंजेक्ट हो सकता है. राइट नाउ, हिस्ट्री ऑफ वायरसेस. व्हाट आर द हिस्ट्री ऑफ वायरसेस that are associated with computer? So there are several stories of the first computer virus. The Pakistani brain virus is 1986 is the first widely spread IBM compatible virus. So which was the first IBM compatible virus? That was Pakistani brain virus and it was spreaded in 1986. Okay students, this is commonly mistaken for the first virus, the Apple virus 1 1981. It is a boot sector infecting virus. It was possibly created for pirated games. Okay, so ये तो हमने गलती से यानी कि ये तो हमने mistaken by mistake we accepted that Pakistani brain virus was the first virus that injected a computer. But before that, Apple virus 1 that is launched, that is that was spread in 1981. It is a boot sector infecting virus. What is it? It is a boot sector infecting virus. It was possibly created for pirated games. Okay, the Animal 1975 Univac, उससे भी पहले एक वायरस आया था जो था Animal Univac 1975. Yes, an animal game is copied to other users. Okay, home directories when run. Okay, so this animal game is copied to other users home directories when run. Okay, so this is how these viruses spread. Classifying viruses category. Now we will classify these viruses into categories. So the computer viruses are classified into following categories. What are these categories? So the first is boot sector. Boot sector viruses are those that infect the boot sector on the computer system. Boot sector means जब भी computer start होता है तो it take 2-3 minutes to start the computer, to log in into the computer, right, and to start operating system in a computer. So this boot sector virus is infect the boot sector on our computer system. It works by replacing the first sector of the disk on the disk with the part of itself. Okay, it hides the rest of itself as where on the disk with a copy of the first sector. जब भी कोई डिस्क कॉपी हो रही होगी तो ये अपने आप को हाइड कर लेता है और कॉपी हो जाता है. The first virus is loaded. The virus is loaded by the program when the machine is switched on. जब भी मशीन स्विच ऑन होगी तभी वो वायरस लोड हो जाएगा. And the virus loads, installs itself, hides the rest of itself and then loads the original program. उसके बाद वो original program में load होता है. Okay, now parasitic virus. Now what is this parasitic virus? So parasitic virus attaches itself to other programs. ये अपने आप को other programs से attach करता है and is activated when the host program is executed. ये कब activate हो जाता है? जब भी host program execute होगा तब वो activate हो जाता है. It tries to get attached to more programs so that the chances of getting activated is more. और ये क्या ट्राई करता है कि बाकी प्रोग्राम से साथ भी अटैच हो जाए ताकि चांस ऑफ एक्टिवेटेड इज more, it gets more, right?
इट स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स व्हेन द अफेक्टेड प्रोग्राम्स आर कॉपीड। जब भी हम कोई ऐसे प्रोग्राम को कॉपी करेंगे जिसके अंदर वायरस इंजेक्ट है, तो वो ही वायरस हमारे कंप्यूटर में भी इंजेक्ट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। दैट इज अ पैरासिटिक वायरस। जेरूसलेम एंड डेटा क्राइम्स आर कंसिडर्ड as parasitic viruses. Okay, students. Next we have is multipartite virus. So what is this multipartite virus? Multipartite virus is a fast moving virus that uses file infectors. तो ये multipartite वायरस क्या यूज करता है? ये फास्ट मूविंग वायरस है और ये फाइल इन्फेक्टर्स यूज करता है और बूट इन्फेक्टर्स यूज कर सकता है टू अटैक द बूट सेक्टर एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स साइमल्टेनियसली। ये डायरेक्टली हमारी फाइल्स को अटैक करता है, डायरेक्ट हमारी बूट सिस्टम को अटैक करता है। मोस्ट वायरसेस ईदर अफेक्ट द बूट सर्किट, बहुत सारे वायरसेस या तो अफेक्ट करेंगे हमारे बूट सेक्टर को, सिस्टम को या फिर प्रोग्राम फाइल को। ओके, सो मोस्ट वायरसेस ईदर अफेक्ट द बूट सेक्टर, सिस्टम और द प्रोग्राम फाइल्स। ओके स्टूडेंट्स, the multi-partite virus can affect both the boot sector and program files at the same time। लेकिन ये जो multi-partite वायरस है ये एक ही टाइम पर दोनों ही सिस्टम को खराब कर सकता है, हमारे बूट सेक्टर को भी अफेक्ट कर सकता है और प्रोग्राम फाइल्स को भी सेम टाइम पर अफेक्ट कर सकता है। thus causing more damage than the any other kind of virus। किसी और वायरस से ज्यादा यही सबसे ज्यादा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डैमेज क्रिएट करता है। दैट इज अ मल्टी-पार्टाइट वायरस। ओके स्टूडेंट्स, okay, so it can damage our memory, disk file and boot sector। Okay students, now next category is macro। So macro virus is a virus composed of sequence of instructions that is interpreted rather than executed directly। ये क्या होता है कि डायरेक्टली एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है, rather than executed directly। डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता है, इसके लिए पहले इंस्ट्रक्शन बनाया जाता है, उसको फिर एग्जीक्यूट किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, राइट। इट इन्फेक्ट्स अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और सिमिलर एप्लीकेशंस। वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को या फिर सिमिलर एप्लीकेशंस को इन्फेक्ट कर देता है। मैक्रो वायरसेस टेंड टू बी सरप्राइजिंग बट रिलेटिवली हार्मलेस। ये सरप्राइजिंग हो सकते हैं लेकिन रिलेटिवली कंपैरेटिवली ये हार्मलेस है। अ टिपिकल इफेक्ट इज अनडिजायर्ड इंसर्शन ऑफ सम कॉमिक टेक्स्ट एट सर्टेन पॉइंट्स व्हेन राइटिंग अ लाइन। जब भी आप कोई लाइन लिख रहे होंगे तो इंसर्शन पॉइंट पर क्या होगा कि अनडिजायर्ड इंसर्शन हो जाएगा, अनडिजायर्ड कॉमिक टेक्स्ट आ जाएंगे वहां पे। तो क्यों आ रहा है ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि वहां पर मैक्रो वायरस इंजेक्ट हो चुका है। ओके, तो ये टिपिकल इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिक वायरस। सो व्हाट इज दिस पॉलीमॉर्फिक वायरस? Polymorphic virus is a complicated computer virus that can affect the data types and function। ये डायरेक्टली डेटा टाइप्स और फंक्शंस को अफेक्ट करता है। कौन सा वायरस? पॉलीमॉर्फिक वायरस। ओके स्टूडेंट्स, इट इज सेल्फ इनक्रिप्टेड वायरस। ये सेल्फ इनक्रिप्टेड वायरस है, डिजाइन टू अवॉइड डिटेक्शन बाय अ स्कैनर। स्कैनर से डिटेक्ट नहीं होता है। इट ट्राइज टू अवॉइड, ये ऐसा डिजाइन किया गया है कि अवॉइड करता है कि डिटेक्शन से भी स्कैन नहीं होगा। Upon infection, the polymorphous virus duplicates itself by creating usable, albeit slightly modified and copies of itself। Similarly, ये जो है बाकी वायरस की तरह, जैसे कि बूट सेक्टर वायरस है जो अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है, जो अपने आप को मल्टीपल कॉपीज में रेप्लिकेट करता है। तो सिमिलरली पॉलीमॉर्फिक वायरस है कि अपने आप को डुप्लीकेट करता है by creating usable albeit slightly modified copies of itself। Okay students, so this is polymorphic virus and these are the categories of viruses we have studied right now। Now what are the types of viruses? So viruses can be of the following types। It can be worms, Trojan horse or bombs। Okay, so virus prevention, what prevention we should keep to prevent our computer from the virus? So we can prevent our computer from virus by the following ways। First is patching the operating system। Okay, second is passwords, always keep passwords। Okay, patching services। Fourth is antivirus software। Okay, and fifth is patching client software, and sixth is firewalls। So these are the virus preventions we should keep in mind during using our computer system। Okay students, so this is a chapter where we have read the computer, about the computer threats। Okay students, hope you understand this chapter very well। Now we will go through the backup menu, that are the most important points of this chapter। Okay, so a virus is able to replicate and create copies of itself। Boot sector viruses are those that infect the boot sector on the computer system। Macro virus is composed of sequence of instructions that is interpreted rather than executed directly। Polymorphic viruses change the appearance with each infection, right? So this is the backup menu part। Students, we will meet in the next video with a new chapter। Till then, keep revising, keep learning। Thank you students, bye bye।